welcome. You're watching Market Meter on Money9. I'm Sakshi, Batra. This is a show where we recap for you the entire market day's action in the first half of trade and also share with you what are the fundamental picks that experts are picking up for you to really understand where are the profit-making ideas coming into. Let's quickly start by understanding how are the markets placed right now and how is the trade going on in the moment. If you see, there was a muted to positive trade right in the beginning of the session today. However, the markets have now slipped into the red and they're giving up on the early gains that they had seen and the kind of gains they had got from as a cue from the global markets as well. 365 points of a decline for the Sensex right now. 51,338 is the level that it is working at. 0.7% of a decline for the Sensex right now. When we talk about the Nifty 50, it's further slipping downwards. It's much below the 15,250, the crucial support level now, and it's inching towards 15,100 at the moment, about 90 points loss. That's 0.5% downtick for the Nifty 50. As far as the Nifty Bank is concerned, that is underperforming the benchmark indices. 36,545 is the level at which the Nifty Bank is performing. Remember, it's a 370 point kind of a cut that we've already seen, almost 1% down in trade today. Remember, we had also seen levels of over 37,500 as well in the previous sessions, but we are now down about 36,545 in the current session as well. As far as the broader markets are concerned, they are outperforming the markets today, still trading in the green. Now the mid cap has caught in space and caught in the pace right now. 0.5% gain for the mid cap index. 20,328 is the level at which the mid cap index is performing. When you talk about the small cap index, however, there's a 0.7% of a gain over there. 133, 134 points of a gain for the small cap index. Both these broader market indices are performing at the closer to their record high levels as well. So that's as far as the benchmark indices and the broader space is concerned. Moving on to what kind of moves are we seeing from individual sectors. तो अगर आप देखेंगे तो ज़्यादातर आज सेक्टर्स लाल निशान में ही कामकाज कर रहे हैं. जो प्रेशर बिल्डअप हो रहा है ऑटो, फाइनेंशियल सर्विसेज और साथ ही एफएमसीजी इंडेक्स. अगर आप प्राइवेट सेक्टर बैंक्स की बात करेंगे, यहाँ मुनाफा वसूली देखने को मिल रही है और फार्मा सेक्टर में भी आज डाउन टिक्स हैं, 0.5% डाउन, और मीडिया स्टॉक्स में भी अब प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है. मेटल स्पेस हाउएवर इज प्रोवाइडिंग द सपोर्ट टू द मार्केट दैट इज नीडेड राइट नाउ विद ओवर 1% gains that we are seeing, so it's still shining. Also the PSU banking space is still holding on to the kind of gains that it had shown in the early market trade today, and it has also extended the rally further, continuing from yesterday's push that we had seen a 6% jump for the PSU banking index yesterday. Again, a 5.5% jump is what we are seeing at the current moment as well. That's an add-on of 134 points in trade right now. एक बार देख लेते हैं कि किस तरीके के और मूव्स देखने को मिल रहे हैं as far as the Nifty Gainers are concerned. ONGC, GAIL, NTPC, IOC and Coal India, these are the heavyweights that are actually pulling the index further up or just not letting it slip much below the crucial support levels. When you see 8.5% is the uptick for ONGC, this counter has been on a fire for a whole lot of time, and remember, the cues are also coming in from the rising crude oil prices. 8.7% uptick for ONGC. GAIL India is also now up about 8.5% in trade. NTPC, IOC and Coal India are other counters that are up about 3 to 5% in trade right now. As far as the laggards are concerned, however, Shree Cement, ICICI Bank, Bajaj Finance, HDFC and Kotak Mahindra Bank, all of them are pulling down the index lower today. 2.5% downtick for these counters. Remember कि जो यहाँ पर ICICI बैंक और बजाज फाइनेंस जैसे काउंटर्स हैं, इनका काफ़ी वेटेज होता है इंडेक्स को नीचे ले जाने के लिए, तो ज़्यादा कंट्रीब्यूशन इन दोनों काउंटर से आ रहा है. HDFC और कोटक महिंद्रा बैंक, तो बैंक्स और फाइनेंशियल्स सबसे ज़्यादा ड्रैग डाउन कर रहे हैं इस वक्त अगर आप देखेंगे निफ्टी इंडेक्स को. और सीमेंट स्पेस से श्री सीमेंट जो एक हैवी वेट है, वहाँ पर भी 1-2.5% तक की गिरावट देखने को मिल रही है. तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो मार्केट्स में सेंटिमेंट अभी भी सबड्यूड है. यहाँ पर एक अपडेट आपके लिए रेलटेल कॉर्पोरेशन के ऊपर. जो आईपीओ है आज बंद हो जाएगा, लेकिन अभी तक का जो रुझान रहा है काफ़ी पॉजिटिव रहा है. ये इशू अभी तक 10.5 गुना तक सब्सक्राइब ऑलरेडी हो चुका है, ओवर सब्सक्रिप्शन चल रहा है और आज आखिरी दिन है, तो देखना होगा कि अंत तक कितना और सब्सक्राइब यहाँ पर ये आईपीओ होता हुआ नजर आता है. और एक हफ्ते बाद इस काउंटर की भी लिस्टिंग होगी और ये दूसरा रेलवे स्पेस की कंपनी होगी जो इस साल अपना डेब्यू करेगी इंडियन मार्केट्स में भी. तो ओवरऑल आपने देख लिया है कि मार्केट्स में
इस वक्त सबड्यूड सेंटिमेंट है, कहीं ना कहीं कंसोलिडेशन का जो दौर है पिछले 2 और 3 ट्रेडिंग सेशन से लगातार चलता हुआ आ रहा है। देखना यह होगा कि और कितने दिन कंसोलिडेशन चलेगा और आगे जाते हुए क्या इस मार्केट को आपको बाय एंड डिप्स की तरह लेना चाहिए और अगेन एक लेग अप मार्केट्स में दिखेगा या नहीं, इसके बारे में भी लगातार एक्सपर्ट्स आपको जानकारी देते रहेंगे यहीं मनी 9 पर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ।